Hello learners, welcome back to the channel Economic Cities. I'm Nida, your educator, and in today's video, I'm bringing you a score booster okay series for the Class 12 Economics Board exam. And in this video, we will discuss top 20 most important questions that are highly expected in the board exam, right? So if you prepare these questions properly, you can boost your score confidently and significantly, okay? So you can just keep your notebook ready or you may take the screenshot and let's start. We will discuss each and every question, okay? First, you take the screenshot, right, of the questions, and then I'm going to provide you the answer key also, okay? So these are the questions. Okay, top 20 highly expected questions in the board exam. One by one, we are going to discuss that. Okay, I hope you have taken the screenshot. Okay, now the first one is what they are asking here. Explain the two sector model of an economy. Now we know very well that is there are two sectors which we are going to consider, that is the household and the firm. So we will mention here that is the basic assumption about the economy is closed economy. There is only two sectors, that is household and firm exist. Then households are the owners of the factors of production and firms produce goods and services. So there are only two types of flows, that is real flow and money flow. Okay. Then role of household, first of all, these provide the factors of production. We know it very well. That is the households provide land, labor, capital, and entrepreneur, okay, to the firms, and in return they get wages, rent, interest, and profit, okay. So they spend their entire income on consumption. So in role of the firms, that is they hire the factors of production that have been provided by the household sector, right? And they use these factors of production to produce goods and services, and they sell their these output to the household. Right, and the firms pay factor income, which they spend entire income on consumption of the goods and services that are produced by the firms. Okay, so these are the things that we need to discuss in this answer. Okay, answer is already being given to you. Okay, you can just make it, okay, write it like this or in other ways. अगर कुछ भी पूछा जाता है, for example basic assumption of two sector model of an economy, कुछ तरह का question बन सकता है, then you have the everything there in the answer. Okay, then circular flow of income, we know that is the real flow and money flow. Factors of production flow from household to firms, and fact goods and services flow from firms to household. Okay, and then money flow, where the involvement of money is there, it is the factor incomes flow from firms to household, and consumption expenditure flows from household to firms. So the conclusion you can also write here: two sector model, incomes generated by firm is fully spent by household, making the circular flow of income continuous and complete. Right. I hope this answer is perfectly fine according to 6 mark question. Okay, and if 2 mark का आता है तो आप उसको role of household या role of firm या circular flow of income define करने के लिए आप उसी में से इसको निकाल सकते हैं, right? Now the next question, difference between stock and flow with suitable example. Now again I have given you the difference between in chart. You also have to follow the same thing. Okay, difference between हमेशा basis के साथ chart में करेंगे आप. Okay, table बना के, then meaning stock refers to quantity measured at a point of time and it is a period of time. Okay, measure over a period of time. ये हमेशा याद रखना और इसी को underline भी कर देना keywords को, right? Time factor, no time period is involved in stock, and in flow time period is involved. Then measurement, stock is measured on a particular date. तो जो highlighted part है that is the keywords. Okay, तो आप क्या करेंगे, keywords को भी आप भी pencil से या pen से highlight कर देंगे. Okay, the nature of the stock is static constant, whereas the flow is a dynamic concept and relationship that is a result of the past flows, that is the stock, and it leads to change in stock. Example, wealth on 31st March. अभी की कोई डेट अगर मेंशन की जाएगी, that is a stock concept, और जो पूरे साल चलता है, that is the income during a year, or what is the profit, okay, that is the flow concept. Then the third question is difference between final and intermediate goods. We know final का मतलब है जो easy to use, foreign के foreign use हो जाए, ठीक है. That is final consumption or investment. Okay, and intermediate goods are those goods which are used as inputs in production of other goods. The nature of users, that is a direct satisfaction मिलती है final goods से. Intermediate goods में further production के लिए वो जाता रहेगा, ठीक है, उसकी एक process चलती रहेगी. Then stage, these are at the final stage of the production, and intermediate goods, they are at an intermediate stage of production. Okay, then included, final goods are included in the, you can say, the calculation of national income, whereas intermediate goods are not included. Okay, purpose, they are meant for consumption or capital formation, and intermediate goods main purpose is for resale or production. Okay, then the examples are of been also given there here. You can go through that. Then simple explanation, अगर one line explanation आता है, then you can just, final goods are used for final consumption, whereas intermediate goods are used for further production. इस तरह के example भी पूछे जा सकते हैं आपसे 1 mark में, MCQ में भी आ सकते हैं. You can easily
go through that. Okay. Then the next question is question number 4, explain production boundary in national income accounting. Okay. So the question, the meaning of the production boundary refers to the limit that defines which production activities are included and which are excluded. Okay. In simple words, it tells us what to count and what not to count, यानी कि including or not including in national income वो आपको items बतानी है. Okay. So first of all, only the goods that is produced, goods and services वो हम include करेंगे, activities बोलेंगे, they are meant for sale in the market, and non-market activities और sorry non-market services with imputed value को हम account में लेंगे. ठीक है, include करेंगे production boundary में. Examples are given here. What is excluded from production boundary? Examples have also been given here. Okay. तो ये आपको अच्छे से इसके एग्जाम्पल्स भी पता होने चाहिए, बिकॉज समटाइम्स इन एमसीक्यू इट्स बीन आस्क्ड. ओके. देन व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर? I think question number 5, right? Question number 5, explain the concept of resident, okay, normal resident and NRI. तो इसमें क्या है? First of all, the concept of resident refers to the economic territory in which a person normally lives and earns income. जहाँ पे रह रहे हैं और आप income भी earn कर रहे हैं. Not the place of birth or nationality. जहाँ पैदा हुए उससे मतलब नहीं है. But you are earning and you are living there. Okay, that is the concept of residence. It is based on economic interest. यानी कि economic interest आपका क्या है? You are getting the money. Okay, you are doing some work over there. So meaning कि अगर person is called a resident of a country, he she normally reside in the country, has a center of economic interest. Important point: a person may be an Indian citizen but non-resident, or a foreigner but resident of India. Okay. The normal resident simply lives in a country for a longer period of time and carries out regular economic interest, generally 1 year or more. Okay. तो ये normal resident है. Then non-resident, NRI जिसे कहते हैं हम, lives outside India and his in a center of economic interest is also abroad. Okay. Then term concept of resident based on economic interest, not nationality. Resident का मतलब क्या है? Short में मैंने one line बताया, person with economic interest in the country. And normal resident living for a longer period of time. Okay, more than 1 year ऐसे हो जाता है. Then NRI, Indian citizen living and earning abroad. Then next question, explain 3 methods of calculating national income. We know there are 3 methods, that is value added method, then expenditure and income method. तो आपका वैल्यू एडेड मेथड में है क्या? आपका फॉर्मूला वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन बताया आपने. अब वैल्यू एडेड किस चीज में आता है? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर, तीनों सेक्टर्स कम ले लेते हैं, एंड देन फाइनल वैल्यूज की निकाल हम उसको खाली कंसिडर करते हैं टू अवॉइड डबल काउंटिंग. देन फॉर्मूला इज समेशन ऑफ वैल्यू एडेड बाय ऑल सेक्टर्स, राइट? एग्जांपल्स में दे रखा है. And it is suitable for measuring industrial and sectoral contribution. Then income method में आपको बताया था RIPEM, RIPEM, जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे, नेशनल इनकम पे मैंने हर क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया है. तो उसमें यही मैं मेथड यूज करती हूँ जिससे आप कभी भी कुछ भूलते नहीं, इसका भी कॉम्पोनेंट. ओके. द फैक्टर्स इनकम इंक्लूडेड, मेरा जो मानना है वो है, जो मैं फॉर्मूला लिखती हूँ, राइप एम. आर इज फॉर रेंट एंड रॉयल्टी, देन इंटरेस्ट, देन प्रॉफिट, then compensation of employees, and then mixed income. Okay, the formula is there, and then it's suitable for distribution of income. Then the next is expenditure method. Expenditure method में मैं जो लिखती हूँ फॉर्मूला, मेरे स्टूडेंट्स को पता है, PNGG. Okay, PNG, that is private final consumption expenditure. Then आपका आ जाएगा, N is for the net exports, then G is for government final consumption expenditure, and आपका the gross domestic capital formation, that is the investment expenditure. Okay, and then we get this GDP at MP, and the following points are there. Okay, and this method is measured by adding all the final expenditure incurred on goods and services produced. Okay, so suitable for aggregate demand. Okay, so these were the methods, and इन तीनों का जो आंसर होता है, चाहे वैल्यू एडेड मेथड हो, चाहे आपका इनकम मेथड हो, और वेदर इट इज एक्सपेंडिचर मेथड, आंसर तीनों का सेम आएगा, राइट? ये आपको पता होना चाहिए. देन क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी. अगेन मैंने आपको बता दिया था उसके कंपोनेंट्स में हम क्या क्या लेते हैं, क्या इंक्लूड करते हैं, इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस. सो एवरीथिंग इज देयर ऑन दिस स्लाइड, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. देन क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑफ न्यूमेरिकल. आपको एक न्यूमेरिकल अगर बोला जाता है कि आप करके दिखाइए, टेकिंग द एग्जांपल ऑफ व्हाट दैट इज, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल. हाँ, जीवीए, फैक्टर इनकम या डेप्रिसिएशन, और एनएफआईए को लेके आपको खुद से बनाना है. सो जीवीए टेम्पी फॉर एग्जांपल 5000 है, कंजम्पशन इज 500, एंड वी एनएफआईए इज 200. सो फर्स्ट व्हाट वी विल डू, जीडीपी एट एमपी है, ओके, इज इक्वल्स टू जीवीए एट एमपी. तो हमने क्या किया, इसमें ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन. ओके,
and then what we will do, we will and then what we will do, we will first add depreciation और फिर उसमें NFIA ऐड कर देंगे, then you will get NF this one, okay, that is the following national income हमें कैलकुलेट करने को मिल जाएगा, राइट। तो ये फॉर्मूला आप इसमें अप्लाई कर देंगे जीडीपी एट एमपी के लिए। जीबी एट एमपी आपको गिवन है तो उसमें हम करेंगे एड डेप्रिसिएशन, देन एनएनपी एट एफसी एक तरफ लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे जीडीपी एट एमपी, एंड देन वी विल ऐड एनएफआईए, तो आपको मिल जाएगा ये आंसर, राइट। देन टू नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट्स, तो टू नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट्स क्या हो जाएंगे आपके, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज जीडीपी, okay, total monetary value of all final goods and services produced within the domestic territory of a country, okay, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। सो रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दोनों का आ जाता है इसमें। देन मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट एंड देन एक्सक्लूड्स इंटरमीडिएट गुड्स, ओके। द नेशनल इनकम वी नो दैट इज रिफर्स टू सम ऑफ ऑल फैक्टर इनकम्स अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, एंड देन फॉर्मूला इज दिस, ओके। जीडीपी एट एमपी में हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन प्लस एनएफआईए, वी विल गेट एनएनपी एट एफसी, ओके। सो दीज वर द थिंग्स which have to be included to the national income concepts, okay। Then question number 10, measures of money supply, M1 M2 M3 M4, इन सबको हमने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, राइट। You can take the screenshot. Money supply means first of all the total stock of money with the public, okay, in an economy at a given time. Then M1 आपका क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट्स विद CCDD OD, ओके। देन M2 आपका क्या है, M1 में हम कर देंगे सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक ऐड कर देंगे। M3 में ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, इसमें M1 के कॉन्सेप्ट जितने भी M1 में आपके दिए गए हैं, CCDD OD, ओके, करेंसी एंड नोट्स, डिमांड डिपॉजिट एंड अदर डिपॉजिट, तो मैं इसको शॉर्ट में कहती हूँ CCDD ओके। तो इस तरह आप याद रखेंगे, कुछ कोई भी कॉम्पोनेंट आप भूलेंगे नहीं, ओके। तो इस तरह हम इसमें ऐड कर देंगे। देन M4 में M3 के सब को आपके जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सब आ जाएंगे, प्लस ऑल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग इंस्टीट्यूशन, ओके। एंड देन देयर इज अ स्मॉल क्विक कंपैरिजन टेबल, ये पूछा नहीं गया बट स्टिल आई हैव गिवन यू, आई हैव प्रोवाइडेड यू, ओके। तो अक्सर ये भी एमसीक्यू में पूछा जाता है कि मोस्ट लिक्विड कौन सा है, मोस्ट लीस्ट लिक्विड बट लार्जेस्ट, तो इन सब चीजों में पॉलिसी डिसीजन मेकिंग के लिए कौन सा आरबीआई फोकस करता है, एवरीथिंग इज देयर, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको प्लीज अच्छे से देखिएगा, ओके। ना मीनिंग ऑफ मनी सप्लाई, अगेन टोटल स्टॉक ऑफ मनी अवेलेबल इन इकोनॉमी एट अ पर्टिकुलर टाइम पॉइंट ऑफ टाइम, ओके। एंड नेचर ऑफ मनी सप्लाई, दैट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, डायनेमिक है, देन कंट्रोल बाय सेंट्रल बैंक है, डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं इनके, इन्फ्लुएंसेस इकोनॉमी, ओके। So this was the question number 11. Now we will move to question number 12. What is the difference between fiat money and legal tender money? The fiat money क्या है? Money whose value is not backed by physical commodity and it is declared as money by the government, that is like gold and silver. Okay. So its value comes from the government authority. It is widely accepted fiat money and can be in the form of currency, notes or coins. Whereas आपका जो legal tender money है, it is the kind of a money that must be accepted by the creditors or the payment of debt. Okay. जो भी हम पेमेंट करते हैं वो क्रेडिटर्स के लिए होता है, राइट, पेमेंट ऑफ डेट करने के लिए। देन क्रेडिटर कैन नॉट रिफ्यूज इट, और जिसको हम दे रहे पैसा वो रिफ्यूज नहीं कर सकता है, राइट। लीगल टेंडर मनी नॉन, वो पैसे वाला आगे ना, 1000 वाला जो मैंने आपको बताया था कि अगर 1000 के अंदर आप पेमेंट कर रहे हैं तो आप कॉइन्स में भी दे सकते हैं, अगर आप जहाँ 1100 या 1001 रुपए भी होगा तो आप उसको कॉइन्स में कर देंगे तो वो सामने वाला जो पार्टी है जिसको आप पे कर रहे हैं, क्रेडिटर है, वो रिफ्यूज कर सकता है। वो वाला कॉन्सेप्ट आपको याद होगा मनी चैप्टर में, अगर आपको नहीं अभी भी याद आया प्लीज गो थ्रू द प्रीवियस वीडियो ऑफ मनी, ओके, जिसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा आपको, राइट। सो दिस वाज द पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 12। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। 13 इज न्यूमेरिकल करना है हमें एनएलआरआर से को लेके यूजिंग सीआरआर एंड एसएलआर, ओके। तो देखो एनएलआरआर का मतलब क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल पोर्शन ऑफ कमर्शियल बैंक डिपॉजिट दैट इज अवेलेबल, जो पैसा कमर्शियल बैंक के पास रह जाता है आफ्टर मेंटेनिंग द रिजर्व, जो मैंडेटरी होते हैं, दैट इज सीआरआर, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ओके। ये नहीं कि जो होता है ये आपको आपको बनाना पड़ता है किससे, मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 100 रुपए हैं, ठीक है, तो अब हम बोला गया कि 10% आपको आरबीआई के पास जमा करना है, तो वो सीआरआर हो गया, कैश रिजर्व रेशियो, तो हमने 10 रुपए
आरबीआई में कर दिए, ठीक है। और ये अपने में, एस का मतलब है यहाँ पे सेल्फ, सेल्फ लिक्विडिटी रेशियो, इसका मतलब है अपने पास आप कितना रख रहे हो। कमर्शियल बैंक अपने पास कितना रख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल ये भी 10% है, तो हमने 10%, 10 रुपए उसके पास भी रखवा दिए। इसका मतलब है टोटल मैंने कितने जमा करे हैं एक रिजर्व में, दैट इज सीआरआर में 10%, एसएलआर में 10%, दैट इज 20% मेरे रिजर्व हो गए। अब 80% जो मेरे पास है वो मैं एज अ लेंडिंग पर्पज बैंक मतलब यूज कर सकता है, ठीक है। तो दैट इज नोन एज NLRR, ओके, नेट लिक्विडिटी रिकवरी रेशियो। तो इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम एक, यहाँ पे एग्जाम्पल देके दिया है। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज मेरे पास है, ठीक है। और मैंने क्या किया है इसमें, 4% आपका सीआरआर था, यानी कि ये आपको आरबीआई को देना था, और एसएलआर यानी कि 20% अपने पास रखना था। तो आपके पास बचा कितना, 76% यू कैन यूज फॉर द लेंडिंग पर्पज, ओके। Then the next is question number 14 is difference between intrinsic value and face value of money. So actual value of the money, material, that is no intrinsic value, and face value, value printed or stamped, okay. They're determined by the physical or material, और ये गवर्नमेंट डिक्लेरेशन से होता है। फेस वैल्यू नेचर क्या है इसका, रियल है, फिजिकल है, और इंट्रिंसिक का, एंड फेस वैल्यू क्या, नॉमिनल है, ओके। चेंजेबिलिटी कैन चेंज विद द मार्केट प्राइस ऑफ मटेरियल, यूजुअली कांस्टेंट, ओके। सो 10 रुपीज कॉइन मेड ऑफ मेटल वर्थ 6, इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी क्या होगी, 6 रुपीज होगी। और 10 का क्या होगा, ये कॉइन है, अगर इसका फेस वैल्यू है तो 10 ही रहेगा, राइट। तो इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या होता है, फेस वैल्यू आपका लीगल वैल्यू होता है बेसिकली, एक सिर्फ समरी टाइप में अगर आपको याद रखना है, सिंपल एक्सप्लेनेशन, फेस वैल्यू इज लीगल वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू इज द मटेरियल वैल्यू ऑफ मनी, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 15 हियर, द व्हाट दे आर आस्किंग हियर, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। तो देखो जितने भी फंक्शंस थे वो हमने वन लाइन में कर दिए, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। एंड मेमोरी टिप्स फॉर बोर्ड, ILR, RMP, CF। तो ये सब आपके फंक्शंस यहाँ पे गिवन है, आप इस तरह भी इसको याद रख सकते हैं, दैट इज अ मेमोरी टिप, ओके। देन अगेन बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज अ बैंकर्स बैंक। देन इसके फंक्शंस क्या होते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक के बहुत इंपॉर्टेंट है, और हाउ इट कंट्रोल्स क्रेडिट, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। तो हर तरह के क्वेश्चंस आते हैं। देन क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल, क्वेश्चन नंबर 17, क्रेडिट कंट्रोल टूल्स ऑफ आरबीआई। तो जितने भी टूल्स हैं ये हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, क्वांटिटेटिव को अलग कर दिया है, क्वालिटेटिव को अलग कर दिया है, ठीक है। एंड वन इसको जो है हमने एक्सप्लेन कर दिया वन लाइन में, ओके। सो यू कैन गो थ्रू दैट। एंड वन लाइन में क्या है, क्वांटिटेटिव टूल्स कंट्रोल टोटल क्रेडिट, वाइल क्वालिटेटिव टूल्स कंट्रोल क्रेडिट फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस। इसके आप जितना भी आपको डिटेल में जाना है तो आप प्लीज मेरा वीडियो, प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा, ओके। और इससे आप ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं, राइट। देन एवरेज प्रोपेंसिटी, you can say here the question number 18, write formulas for APC, APS, MPC, MPS। तो एवरेज का मतलब ही होता है आपका पर यूनिट, ओके। तो वाई यानी कि नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय कंजम्पशन, ओके। एंड देन द फॉर्मूला इज देयर, एग्जांपल इज आल्सो देयर। देन एपीएस क्या है, सेविंग कितना कर रहे हैं आप, ठीक है। तो नेशनल इनकम यानी कि दैट इज वाई इज नेशनल इनकम, एपीएस इज इक्वल्स टू वाई बाय save, S is for saving, okay. And then again the definition is there, that is the proportion of total income that is saved. Then APS का ये भी फॉर्मूला कर सकते हैं, अगर आपको APC गिवन है और बोला है APS करने के लिए, तो you can write here it is 1 minus APC, okay. Then MPC, that is the marginal, additional कितना हुआ, right, that is the fraction of additional income that is spent on consumption, explanation, and the formula is MPC equals to delta Y upon delta C. Then example given, then MPS again, the it is the difference or the fraction, it is additional income that is saved, okay. Then delta Y upon delta S, यहाँ पे मैंने अपॉन का साइन लगाना मैं भूल गई हूँ, आप प्लीज इसको यहाँ पे चेक कर लेना, ठीक है। डेल्टा वाई और डिवाइडेड बाय डेल्टा एस होगा यहाँ पे, ठीक है। और अदर फॉर्मूला टू कैलकुलेट एमपीएस, इफ एमपीसी इज गिवन देन 1 माइनस एमपीसी। देन डिफरेंस बिटवीन इन्वेंट्री स्टॉक एंड अनप्लान्ड चेंज इन स्टॉक। So what you can do here is this, that is, just wait. Hmm. Inventory refers to the goods that a firm holds at any point of time, either for future sale, okay, and includes raw material and smooth production and meeting demand. Then unplanned change in stock, actual sales differ from expected sales, leading to unexpected increase or decrease in inventory. ठीक है। सो वन लाइन आंसर क्या होता है, इन्वेंट्री में स्टॉक गुड्स हेल्ड बाय अ फर्म फॉर फ्यूचर यूज और सेल, जैसे हम रखते हैं जो, ठीक है। और अनप्लान्ड चेंज इन स्टॉक है, अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज और डिक्रीज इन इन्वेंट्री,
ड्यू टू डिमांड वेरिएशन, डिमांड बढ़ी है कम हुई है, उसकी वजह से जो अनप्लान्ड आता है, एक आपने प्लानिंग नहीं करी है। जो प्लानिंग करते हैं वो क्या होता है, एक तरीके से आपका इन्वेंट्री है जो आप रखते हैं स्टॉक फॉर फ्यूचर सेल या यूज के लिए, ठीक है। दैट इज इन्वेंट्री। अनप्लान चेंज हुआ मतलब एकदम से डिमांड बढ़ गई और आपका जो है चेंजेस आ गए, अनएक्सपेक्टेड हो गया इंक्रीज, ठीक है, या डिक्रीज कर गया, तो दैट इज नोन एज द अनप्लान चेंज इन स्टॉक। देन इन्फ्लेशनरी गैप एंड डिफ्लेशनरी गैप, द डिफरेंस इज हियर, okay, you can go through this inflationary and deflationary gap, okay, and then the diagram is here. Fine. So with this, we come to the end of this most top 20 important board exam questions. Okay, if this video helped you, like and share it with all your friends. Comment done after revising all 20 questions and subscribe to Economics at Ease for more focused videos. Study smart, stay calm, and give your best. All the very best. Thank you for watching.